In the previous lecture, we were discussing direction fields. Now, this topic, but today we will discuss autonomous differential equations, or ODEs for the time being. Okay. Autonomous differential equations are very important, and we also discuss the direction fields of autonomous differential equations as well. So an ODE of the form, an ODE in which the independent variable does not appear explicitly is called, or is said to be, autonomous differential equation, or whatever you say, ODE. For example, in general, how do we write autonomous ODEs? We write them f of y and y dash is equal to 0. This is the most general form. Or we can write them in normal form as dy by dx is equal to f of y. Now you can see here that the function here is only the function of y, where you can say that this function f of y is a function of y only. If y is the dependent variable, there is no x in this differential equation explicitly. For example, you can say that the following differential equations are autonomous differential equations. Maybe dy by dx is equal to y into 1 minus y. So in the right hand side, in this function, there is no x. It doesn't appear explicitly. So we call these kind of differential equations as autonomous differential equations. Or another example, maybe dy by dx is equal to some maybe 5y plus 3. So this kind of differential equation in which independent variable doesn't appear explicitly in this function, in the right-hand side function, this kind of differential equation, we call them autonomous differential equations. Other examples may include the dependent variable may be different. For example, dt by dt is equal to some constant times t minus t naught. Or you can say here that it is some maybe 25 and it is 3. Okay. Now the independent variable is t here, small t, and the capital T represents the temperature. We discussed the Newton law of cooling. So dependent variable is only there. This is the function of dependent variable only. There is no independent variable in the right-hand side function. So these kind of differential equations are autonomous differential equations. I hope you get it. If you have any question, you can ask. Now, the critical points in autonomous differential equations are very important while making the direction fields of these kind of differential equations. Now, what are the critical points of autonomous differential equations? Any point, let me write the proper definition.
A real number say C, constant maybe, real number uh, is a critical point of an autonomous differential equation if f of C is 0. That is, what does it mean? If we have an autonomous differential equation dy by dx is equal to f of y, sorry, then y is equal to C is the 0 of the right-hand side function of the right-hand side function f of y. Okay. This is. So any real number which is the zero of a function, 0 of the right-hand side function. I hope you know what is the 0 of any function. 0 of a function is that point at which that function gives us 0 value. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. So a critical point of any autonomous differential equation is that point at which the right-hand side function is 0. Okay. For example, if we have this kind of differential equation dy by dx is equal to maybe 2x into x minus 3. Okay. Now, what are the zeros of this differential equation? Sorry, not x, y. You can write there's 2y minus 3 minus y. Okay. Now, this is an autonomous differential equation, and its critical points. How to find critical points? This is your right-hand side function. F of y is 2y, 3 minus y. Now, in order to find the critical points, what we do, we put f of y is equal to 0. It means 2y, 3 minus y is equal to 0. From here, we can find y is equal to 0 and y is equal to 3. These are two critical points of the given autonomous differential equation. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. So these critical points are basically, they are very important. They are also isoclines of the given differential equations. Isoclines, I told you what are the isoclines in any differential equation. Isoclines are those lines in the direction fields at which at each point of those basically curves or straight lines, the slope remains constant. So these are also the isoclines. Now, if we define this differential equation is basically defined on the xy plane for all. Basically, it is defined on xy plane. Okay. So what these critical points they do, they actually divide the xy plane into subregions. For example, अगर आपके पास यहाँ पे y is equal to 0 और y is equal to 3, आपके पास दो lines हैं. What is y is equal to 0? Y is equal to 0 is this line. Okay. And what is y is equal to 3? For example, 3 is here. Then this line is y is equal to 3. Now, these critical points have divided the xy plane into 3 regions. This is your region 1.
This is your region 2, and this is your region 3. Now, these divisions, okay, XY plane have been divided into three regions. Now, these divisions, they help us to draw direction fields. Now, direction fields and even the solution curves of which we obtain after basically making a direction field, they do not cross these lines because these are the critical points. So we'll do it later on. I'll explain you more uh, later on. Now, if we have this differential equation and we want to draw the direction field of this differential equation, ठीक है? क्या करेंगे? Let me go to the other board. What is the phase portrait? Now we are going to draw the phase portrait of that particular example. Now, in an XY plane, now we have three regions. One is y is equal to 0. This one is y is equal to 3. Now we have three regions. Sorry. This is your region 1. This is your region 2. And this is your region 3. Now we check whether the function is increasing or decreasing in these regions. So what is the function? What is f of y? It is 2y into 3 minus y. Okay. Now we check whether this function, अब आप देखें कि how many region do we have? Region 1 में आपके पास अगर आप इसको एक टेबल बना लें, ठीक है, तो यहाँ पे region 1 क्या है? It's from 3 to infinity, and this is 0, and this is minus infinity. Now we divide these intervals is basically minus infinity. तो पहले region 3 लिख लें आप, या पहले region 1 लिख लें आप, doesn't matter. So region 1 is between 3 to infinity. Okay. Region 2 is from 0 to 3. And region 3 is minus infinity to 0. Okay. अब आप साइन देखें किसका f of x का साइन f of y का साइन देखें, इस रीजन में क्या साइन होगा f of y का? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? We have to compute the value of f of y at some point here. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट 4 आप कैलकुलेट कर लें वैल्यू. f of 4 क्या आता है हमारे पास? 2 into 4 and 3 minus 4. It is what? It is negative. So we need to check only the sign of f of y. So it is negative here. So the function f of y, अगर इसकी basically f of y, what is it? It is the slope. ठीक है, dy by dx. If the slope is negative, then the function must be decreasing. Now in the second region, we choose some point maybe 1. So अगर आप 1 इसमें put करें, तो it is positive. So the function, if the slope is positive in this region, then the function must be increasing in this region. Now in the last region, what is the sign of this thing? अगर आप कोई भी -1 for example put करते हैं, तो यहाँ पे -1, 3 minus -1, 4, and this here we have -1, so it is whole negative. It is negative, the function must be decreasing. I hope you remember from the calculus, when the derivative of some function is negative in some particular region, then the function in that region
must be decreasing अगर साइन नेगेटिव है. अगर साइन किसी भी डेरिवेटिव का पॉजिटिव है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो in that particular region the function must be increasing. This is a very basic concept in calculus. I hope you know it. If you have any confusion, if you have any question, you can ask me. Now we know that the function is negative in this region. What is this function? This is basically dy by dx. And what is dy by dx? Is the first derivative rate of change of functions. If the first derivative is negative in this region, then the function, original function, which is the solution of that differential equation, that must be decreasing in this region. Means the function here, the function must be decreasing. Okay. Now, in the second region from 0 to 3, the function is positive, so the original solution of that differential equation must be increasing in this region. So the function must be somewhat increasing here in this region. And in the last region, the function is decreasing, so the function must be decreasing here. Now, this is called the phase portrait of the given autonomous differential equation. In phase portrait, what do we display? There's a question in the chat window, Amin Salman, but sir, this isn't the derivative sign, this is the function sign. Now, f of y is equal to what? Where did we get this function? Please look at this board. This is your f of y, and f of y is equal to what? It is dy by dx. It is basically the derivative of y with respect to x. So this function in here, this function f of y is basically what? It is your dy by dx. Actually, what are you doing? You are trying to display information about dy by dx. Okay, because dy by dx is equal to this. First, what we did, we find the critical points of this function, which divided the given region into several subregions. Then in each region, we check the sign of this function. Sign of this function means it is the sign of dy by dx. Okay, so पहले इंटरवल में function negative है, it means dy by dx negative है. The function must be decreasing. And then second में increasing, third में decreasing. सबसे पहले हमने xy plane को तीन regions में या जितने भी regions होंगे, जितने भी critical points होंगे, अगर एक critical point है तो xy plane दो regions में divide होगा. अगर दो critical points हैं तो तीन regions में, अगर तीन critical points है तो चार regions में divide होगा. Then in each region, we have to check the sign of that derivative. That sign will help us to know whether in a particular region, the function, the original function is increasing or decreasing. So, Sir, हर region में direction change होगी या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है. It doesn't depend on, it depends basically on a particular function. ठीक है? अगर function में यहाँ पे मैं I do something, यहाँ पे पॉजिटिव कर दे आप, ठीक है, 3 माइनस वाई की जगह 3 प्लस वाई होता तो क्या होगा? पहले रीजन में भी पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव और तीसरे में भी पॉजिटिव. व्हाट डज इट मीन कि तीनों रीजन्स में फंक्शन क्या है, उसका साइन पॉजिटिव है. इट मींस डेरिवेटिव पॉजिटिव है. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन तीनों रीजन्स में इंक्रीजिंग ही होगा. ठीक है. सो it depends on the nature of a function कि किस रीजन में उसका क्या साइन है. ठीक है. तो रफली आप ये बता दें रीजन्स में कि किस रीजन में जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है. ठीक है. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट फंक्शन. So this kind of information or this kind of figure is called phase portrait, corresponding to some particular autonomous differential equation. I hope you get it. If you have any question, you can ask me.
Now, for that particular autonomous differential equation, this is the phase portrait. Now, what we are going to do, now we are going to plot the direction fields. Direction fields may showing or drawing direction fields of these kind of differential equations means autonomous differential equations is relatively easy than the normal differential equations which we discussed in the previous lecture. Okay? Autonomous differential equation may, according to the phase portrait, we know that the region has been the xy plane has been divided into three regions. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास y is equal to 3 आ जाएगा. ठीक है, yes. तो आपको यू ऑलरेडी नो कि इस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें भी डिक्रीजिंग है. ठीक है, अब जस्ट दो चार पॉइंट्स पे आप लाइन एलिमेंट्स या लाइनल एलिमेंट्स जो है उनको प्लॉट करें. ठीक है, एंड देन यू नो कि आपके पास डायरेक्शन फील्ड्स किस टाइप की होंगी. फॉर एग्जांपल I have calculated in this region minus infinity to 0. ये जो रीजन है इसमें मैंने y की वैल्यूज और f of y की वैल्यूज ये कुछ कैलकुलेट की हैं सिर्फ -1, -2 और -3 पे. -1 अगर आप फंक्शन में पुट करें, आपके पास फंक्शन f of y क्या है, इट इज 2y and 3 minus y. ठीक है, सो -1 अगर आप पुट करें f of -1, तो आपके पास 2 into -1 into 3 minus -1. What is it? It is 4 2s are 8 and it is -8. यहाँ पे ये -8 आ जाएगा, यहाँ पे -20 and -36. Similarly, अगर आप सेकेंड रीजन विच इज 0 and 3 रीजन है, इसमें आप 1 सॉरी इसको सेपरेट कर लें थोड़ा सा सो दैट यू पीपल डोंट कंफ्यूज इट. 0 और 3 रीजन में आपके पास y and f of y आप सिर्फ दो 1 2 या 1 और 1.5 और 2 ले लें. 1 1.5 एंड 2 ये 3 पॉइंट्स ले लिए, इस पे स्लोप कैलकुलेट कर ली 4 4.5 एंड 4. ठीक है, ये दूसरा रीजन हो गया. अब जो लास्ट रीजन है 3 to infinity में आप क्या करें, y f of y, इसमें y में मैंने पॉइंट्स ले लिए 4 5 6. ठीक है, तो these slopes are -8 -20 and -36. ये हमारे पास दो तीन वैल्यूज पे हमने चेक कर लिया कि आपके पास स्लोप्स क्या है. अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 and 3 4 5 and 6 4 5 and 6. ठीक है, फिर -1 -2 and -3. Now you have to draw the lineal elements, जो small line segments आप draw करते हैं. ठीक है, यहाँ पे इस पे 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5 -1 -2 and -3. अब आप देखें -1 पे क्या स्लोप है, y -1 -8. y is -1, तो आपके पास स्लोप क्या है, -1 पे भी स्लोप यही होगी, -2 पे भी यही होगी, -3 पे भी होगी. क्यों? क्योंकि देयर इज नो x. फॉर एनी x y की वैल्यू -1, x की जो मर्जी वैल्यू हो, तो आपके पास ये जो आइसोक्लाइन होगी इस पे हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, -8 होगी. ठीक है, तो आपके पास -8 फॉर एग्जांपल इस काइंड ऑफ चलें कोई और कलर यूज करते हैं. -8 स्लोप फॉर एग्जांपल ये है. ठीक है, ये आपने एक
लाइन सेगमेंट या एक एरो, स्मॉल एरो ड्रॉ कर दिया विच इज कॉल्ड लाइनल एलिमेंट। -2 पे स्लोप क्या है? -2 पे यहां पे भी स्लोप फिर क्या आ रही है? इट इज एक्चुअली -20। तो ये थोड़ा सा और स्टीप हो जाएगा एरो। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको, अगर यहां पे है तो ये -20 स्लोप यहां पे आ जाएगी। आई होप यू नो कि ये अप्रोक्सीमेट स्लोप्स आप कैसे एरो ड्रॉ करेंगे। -3 पे -36 है, तो -3 पे ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल के नजदीक होगा। तो ये इसकी आपके पास क्या होगी? स्लोप होगी। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर में प्लॉट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपके पास -36। अब देखें, ये हर पॉइंट पे स्लोप इसकी सेम होगी। यहां पे भी यही एरो होगा, यहां पे भी ये सारे एरोज सेम होंगे। इसी तरह येलो वाले एरोज हर पॉइंट पे क्या होंगे? सेम होंगे। इनकी स्लोप एग्जैक्टली क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। ठीक है, इसी तरह यहां पे नीचे हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पे भी एनीवेयर यहाँ पे इसकी स्लोप -8 होगी, यहाँ पे इसकी स्लोप -8 होगी, एंड सो ऑन। सिमिलरली दिस वन, यहाँ पे -20 होगी, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास -36 स्लोप होगी। सो ये, अब ये आपका इस रीजन में आपके पास ये डायरेक्शन फील्ड्स आ गई, लाइनल एलिमेंट्स आ गई। अब दूसरे रीजन में आप अगर देखें, 1 पे 4 है, 1.5 पे इतनी है, और 4.5 एंड 2 पे 4 है। अब आप 0 और 3 रीजन में आपके पास पॉइंट 1 है, ये y1 है, यहाँ पे x की जो मर्जी वैल्यू, इन सारे पॉइंट्स पे डायरेक्शन फील्ड्स क्या होंगी? सॉरी, लाइनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम स्लोप के होंगे। 1 पे 4 स्लोप है और पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 की पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4 स्लोप ये है। ठीक है, और 1.5 पे स्लोप थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, विच इज 4.5, तो इससे थोड़ा सा स्टीप एरो होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 4.5 स्लोप। ठीक है, और 2 पे, सॉरी, थोड़ा सा छोटा, 1 पे यहाँ पे ये इस तरह का एलिमेंट होगा, फिर 1.5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा एरो जो है वो स्टीप होगा। इस पे स्लोप 4.5 होगी, और 2 पे स्लोप जो है वो अगेन 4 होगी। अगेन 4 मींस थोड़ा सा कम स्टीप एरो होगा, जस्ट लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस एरो, सेम। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट्स हैं पैरेलल में, उन पे सब पे स्लोप सेम होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे भी आपके पास ये स्लोप्स होंगे। एंड देन 1.5, ये आपके लाइनल एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, इनमें थोड़ा सा कम स्टीप होगा एरो ऊपर वाले एरो से। ठीक है, ये इसके लाइनल एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अगर आप 2 पे देखें, तो 2 वाले एरोज जो होंगे वो थोड़े से इससे कम स्टीप होंगे। ठीक है, यहां पे सिमिलरली दिस वन। अब थर्ड रीजन में आपके पास, सॉरी, थर्ड रीजन में अगर आप देखें, तो फिर -8, -20 एंड -36, 4 5 6। सो 4 अगर है यहाँ पे, तो 4 पे किसी भी x की वैल्यू के लिए आपके पास -8 स्लोप है। तो ये -8 मींस डिक्रीजिंग। तो ये आपका जो लाइनल एलिमेंट होगा उसकी स्लोप अप्रोक्सीमेटली -8 होगी, और ये हर पॉइंट पे ऐसे ही होगी। ठीक है, इधर भी आपके पास, यहाँ पे भी ये आपके पास लाइनल एलिमेंट्स इस तरह आएंगे। ठीक है, -5 पे -20 स्लोप, द एरो विल बी स्टीपर। नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये एरोज जो है वो पैरेलल में सारों की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। ठीक है,
फिर -6 पे आपके पास 9 -36 स्लोप है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो एरो होगा ये बहुत ज्यादा स्टीप होगा यहाँ पे, ठीक है। -36, यहाँ पे भी -36, यहाँ पे भी -36, ठीक है। So now you have the direction fields and you have an idea of solutions के solution किस type का होगा. Now if I want to plot the solution or draw the solution curves, तो ये किस type की होंगी? यहाँ पे देखें, अगर it depends कि solution किस point से pass कर रहा है आपका. यहाँ पे अगर आप यहाँ से start करते हैं तो आपका जो solution होगा basically इस सोल्यूशन कर्व जो होगी वो इस पॉइंट, इस एरो को एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी, क्योंकि ये आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप है। तो आपके पास सोल्यूशन कर्व यहाँ पे ज्यादा स्लोप है, ऊपर जाके कम है, मजीद ऊपर जाएंगे तो स्लोप डिक्रीज होती जाएगी। तो आपकी सोल्यूशन कर्व यहाँ पे इस टाइप की होगी, इस टाइप की, और इधर से दोबारा यूं होगी, ठीक है। सो द सोल्यूशन इज बेसिकली ऑफ दिस काइंड। आप कितनी कर्व्स यहाँ पे सोल्यूशन कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनिट मेनी। तो यहाँ अगर सोल्यूशन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो सोल्यूशन कर्व इस टाइप की होगी, ठीक है, दिस वन। अगर यहाँ से आप लेंगे तो सोल्यूशन कर्व इस टाइप की होगी। इन शॉर्ट आपके पास इनफिनिट मेनी कर्व्स होंगी इस टाइप की, यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें नीचे वाले रीजन में, तो यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है। तो सोल्यूशन आपका बेसिकली अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो बेसिकली किस टाइप का होगा? यूं, ठीक है, इस टाइप का सोल्यूशन होगा। इधर पास कर रहा है तो यूं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इधर पास कर रहा है तो यूं होगा, एंड सो ऑन, सिमिलरली दिस वन। अब ऊपर वाले में सेक्शन में यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा? ऊपर ज्यादा स्लोप है, फिर कम है, फिर उससे कम है। तो सोल्यूशन आपका बेसिकली देखें, अगर आप डिक्रीजिंग है तो अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस टाइप का सोल्यूशन होगा, यहां से। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, सोल्यूशन कर्व्स होंगी? Infinite many solution curves होंगे. So these are basically the direction fields of the given differential equation. If you have any question, you can ask me. Look at these things carefully. I give you 1 minute to think about it, and then you can ask me any question. I hope you get it. अब अगर solution curve आपके पास infinite many solution curves हैं, I'm going to repeat it because the recording was paused. तो अगर आपके पास इन्फिनिट मेनी कर्व्स हैं जो कि सॉल्यूशन कर्व्स हैं, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन ये है कि y at 0 is equal to 1, तो in that case we can find the value of that particular constant of integration जो कि सॉल्यूशन में आ रहा है। इन दैट केस आपके पास इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन कर्व्स नहीं होंगी। अब हमने सिर्फ वो सॉल्यूशन कर्व प्लॉट करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही हो, और ये पॉइंट क्या है? y at 0 is equal to 1 means it is 0 1. So the solution curve which is only passing through 0 1 point is this one, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास ये सॉल्यूशन होगा। अब अगर मैं इनिशियल कंडीशन को चेंज करता हूं, सेकंड केस y at 1 is equal to 4, अब सिर्फ वो सॉल्यूशन कर्व प्लॉट होगी जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है। So in this case you draw another figure, और जो सॉल्यूशन कर्व होगी वो सिर्फ 1 4 पॉइंट में से पास करेगी जो कि ये कर्व होगी, ठीक है। तो इन दैट केस सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सिंगल कर्व होगी जो कि उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट द सॉल्यूशंस corresponding to or the solution when the solution is passing through a certain point. If you have any question, you can ask me. So this is what we have all about the autonomous differential equation and their direction fields.
it is relatively easy to plot the direction fields of an autonomous differential equation. Now we are going to discuss the modeling using only the first order ODEs. Okay. There are many physical phenomena, or first of all, what is modeling or mathematical modeling? It's if you want to write the definition of this thing is uh, a DE, a differential equation, in general, a differential equation that describes a physical, or you can say social process uh, close enough, you can say that, is called a mathematical model. Any differential equation which describes a physical phenomena, a physical process, you can say a social process closely enough, that kind of differential equation is basically called a mathematical model. For example, जैसे कि हमने Fourier law of cooling देखा था, ठीक है? In that particular law, अगर आप देखते हैं example में, so the first thing which we discuss here is the Newton law of cooling. Or you can say population growth. Population growth and decay as well. Okay. Newton law of cooling में क्या था आपके पास? The temperature of a certain thing, temperature of a certain thing is proportional to its current temperature minus the temperature of outside, or the environment temperature or room temperature. इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, T naught कह दें, ठीक है. So this gives rise to a first order differential equation. अगर हम ये constant of proportionality को हटाएं, तो T by dt is equal to some constant K times this. This is basically, it gives us a first order differential equation. Similarly, population growth and decay models, if we assume that a population of a certain town or certain city or certain country, or you can take some other population of as well, for example, some biological organisms, growth of a bacteria, growth of rabbits, or any population growing. So in these kind of physical phenomena, we also have first order differential equation, a kind of dp by dt is proportional to p. What does this tell us? The rate of change of a population of a certain town or some certain community is proportional to its current population. Okay, इसको हम we'll discuss this in more detail. But these kind of physical processes, we can basically we can convert them into a mathematical model using differential equations. Particularly, we are discussing only the first order differential equation. Now, a single differential equation, for example, a first order differential equation, अगर आप कहें first order differential equation, ODE, is basically is of this form: dy by dx is equal to f of xy. Okay.
और इसमें particular kind of differential equation, for example, first one, d, uh, you can say population growth को अगर आप देखें, dp by dt is equal to some constant k times p. ये जो differential equation है, it can model several physical phenomena. A single differential equation can model several physical phenomena. For example, आपके पास ये जो differential equation है, which basically this differential equation can model uh, population growth, growth and decay. ठीक है. B, अभी मैंने जो आपको बताया, rate of change of heat, or you can say excess heat. ठीक है. How the rate of change of heat happens uh, in a certain material which is basically warmer than the room temperature. C, this differential equation can also model a radioactivity. What is radioactivity? It is, we'll discuss it when we'll discuss these examples of radioactivity. We can model several other things. For example, I have written in the notes here. We can use this particular differential equation to model the RC circuits, electric circuits, you can say in general. Okay. Particularly RL and RC circuits. We'll discuss in detail later on what are RL and RC circuits. We can many other applications, many other physical phenomena we can model by a single differential equation of this kind. Okay. In different situations, we denote it differently. For example, in population growth and decay models, we denote it by dp by dt, where we take the dependent variable as a p. Whereas in the heat transfer problems, where we use the Newton law of cooling, we use it dt by dt, where t represents the temperature and it is proportional to, या आप कह सकते हैं K, this is equal to some constant, maybe lambda times T minus T naught, where T naught is the room temperature. Okay? So this is again a similar kind of differential equation. रेडियोएक्टिविटी में आप इसको किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं. आप इसको डी ए बाई डी टी या डी आर बाई डी टी कह दें. ठीक है, ठीक है, इट डजंट मैटर. ठीक है, k टाइम्स r. So in different situations, हम notation इसकी different रख सकते हैं. ठीक है. Now let's discuss one by one these phenomena which we can model using the first order differential equation of this kind. If you have any question, you can ask me. First of all, we shall discuss population or population growth and decay models. ठीक है. इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके मॉडल्स भी कहते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको क्यों कहते हैं, आई विल टेल यू आफ्टर अ व्हाइल. Now the question is how to model population growth or decay. So at first we shall write a very simplified model. Okay. For example, the first one is pure birth process. Okay. In a certain community, in a certain town,
हम assume करते हैं कि within a certain time limit there are no deaths happening, ठीक है. कोई कोई इंसान या कोई भी अगर बैक्टीरिया है कोई या कोई रैबिट है जो पॉपुलेशन अंडर कंसिडर है. फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल लाहौर में, ठीक है, देर आर 100,000 पीपल, अस्यूमिंग, वी अस्यूम इट, ठीक है, और इन अ सर्टेन टाइम हम अस्यूम कर रहे हैं कि कोई भी बंदा मर नहीं रहा, ठीक है, नोबडी इज डाइंग इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है, only the people are basically there are only births in that particular period of time. Then we say that the population of this city, the rate of change of the population of Lahore in that certain period of time is proportional to its current population. ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k times p, where k is what, it's the birth rate. Now if I uh, say that, for example, the initial population of Lahore is maybe 50,000 or 5,000, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है. If initial population is 500 या 5,000, ठीक है, and the population is growing at a rate of maybe 2% per year, ठीक है. Find the population after 10 years, ठीक है. अगर इनिशियल पॉपुलेशन 5,000 है लाहौर की, ठीक है, और पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर, 2% पर ईयर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है. सो व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है. इसमें इस मॉडल में हमने अस्यूम किया है कि कोई भी डेथ नहीं हो रही ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, और पॉपुलेशन इज ओनली ग्रोइंग, ठीक है, एट अ सर्टेन कांस्टेंट रेट. We can find the population after 10 years in this case. Now, in this case, what we will have, the differential equation, this one will become what? dp by dt is equal to k is the rate of change of population, ठीक है. तो यहाँ पे रेट क्या है, 2% है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.02 times p, along with the initial condition p at 0 is 5,000, ठीक है. तो ये आपके पास एक कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल आ गया है which describes this physical process, ठीक है. And what is this? This is basically a first order initial value problem, ठीक है, and this is first order initial value problem. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. I'll give you a couple of maybe 10 to 15 minutes to think about it, to look at this mathematical model. If you have any confusion, you can ask me. Now we can solve this initial value problem and get, sorry, get the solution. Let's discuss the solution of this differential equation. Now the differential equation is dp by dt is equal to 0.02 times p, okay. Now
how can we solve it? This is a separable differential equation. This is also a linear differential equation. We can easily solve it. 1 over p dp is equal to 0.02 times nothing dt. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ p आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0.02 टाइम्स t प्लस c. अब नेचुरल लॉग अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास p क्या आ जाएगा, e रेस पावर 0.02t प्लस c. अब e रेस पावर c को अगर हम सेपरेट कर लें, वी कैन राइट इट, आई होप यू ऑब्वियसली नो इट, this into e raised power c. तो e raised power c को हम कोई और कांस्टेंट कह देते हैं. तो now we get p of t is equal to some constant c naught times e raised power 0.02t. Now you can see that the solution of the given differential equation, it involves the exponential function. ठीक है, इसीलिए हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके मॉडल्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके मॉडल्स भी कहते हैं. या कोई भी फिजिकल प्रोसेस है जिसका सॉल्यूशन अगर इस टाइप का है, एंड हियर वी हैव पॉजिटिव ग्रोथ, द ग्रोथ इज पॉजिटिव. ठीक है, देन वी से दैट द गिवन पर्टिकुलर मॉडल इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ नेगेटिव है, मींस the population is decreasing due to the deaths in the people, deaths of the people. तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा, मींस डिके होगा. तो ये एक्सपोनेंशियल डिके प्रॉब्लम्स होंगे जिनका भी सॉल्यूशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग दैट इनिशियल कंडीशन वी कैन फाइंड दिस कांस्टेंट c नॉट. अब आपके पास हमें पता है कि p ऑफ 0 इज 5000 है. ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5000 इज इक्वल टू c नॉट e रेस पावर 0. t की वैल्यू 0 है तो 0 e पावर 0 1 हो जाएगा. तो आपके पास c नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, you get the value of c naught is 5000. Now your solution is complete. So p of t is what? It's 5000 times e raised power 0.02 t. Now you have the solution of the given differential equation. Now you can find the population after 10 years. ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, t की वैल्यू 10 यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, e raised power 0.02 into 10. After solving this expression, you will get the population after 10 years. I hope you can do it using the calculator. Now, if you have any question, you can ask me. Now, if someone asks me, when the population doubles, find the time when the population doubles. ठीक है, मीन्स आप वो मुझे टाइम बताएं जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाएगी. हाउ कैन फाइंड लाइक दैट, हाउ कैन आई फाइंड दैट टाइम. ठीक है, दिस वेरी important question which is usually asked in the applications of the growth model, and this is called doubling time. ठीक है, डबलिंग टाइम. मतलब अगर आपके पास कोई भी किसी भी सर्टन कम्युनिटी में कोई पॉपुलेशन है तो वी आर वेरी इंटरेस्टेड कि इसकी पॉपुलेशन डबल कब होगी, फाइंड दैट टाइम. ठीक है, you know that the population solution of that population model is what? It is 5000 times e raised power 0.02 times t. ठीक है, so doubling time, we need to find that time in which the population doubles. तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉपुलेशन आपके पास क्या है, p at 0 is 5000. ठीक है, तो ये डबल कब होगी, मींस डबल का मतलब क्या है, डबल पॉपुलेशन क्या होगी, डबल पॉपुलेशन इज 10,000. ठीक है, अब हमें ये पता है कि इनिशियल पॉपुलेशन ये है
उसका डबल क्या होगा? 10,000 होगा डेफिनेटली। 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूजिंग दिस थिंग पी ऑफ टी को आप 10,000 रखें, ठीक है, और इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे 5,000 ही है, ठीक है। ई रेस पावर 0.02 टाइम्स टी। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास टाइम आ जाएगा व्हेन द पॉपुलेशन विल बी डबल, ठीक है। अब यहां पे अगर 5,000 है तो यहां पे उसका डबल होगा डेफिनेटली। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 at p at 0 एंड दिस इज योर p at 0 ऑलवेज, ठीक है। यहां पे p of 0 है, यहां पे 2 into p of 0 है। यहां से p of 0 और p of 0 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ यहां पे क्या बच गया? 2। सो इट मींस 2 इज इक्वल टू e raised power 0.02 टाइम्स t, ठीक है। अब यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? ये t को आपने पहले फाइंड करनी है, आप डेफिनेटली आपने इसको नीचे लाना है तो दोनों तरफ log लेंगे। तो आपके पास log of 2 is equal to 0.02 t log of e। अब हमें पता है कि log of e क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। सो इसको आप एलिमिनेट कर दें। What do you get from here? Log of 2 is equal to 0.02 times t। यहां से आपके पास t आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.02। Now, what was the 0.02? It was rate of growth rate of the population, ठीक है। तो ये आपके पास t डबल आ गया है, ठीक है, मींस ये डबलिंग टाइम है। या आप इसको कोई और नोटेशन दे दें, ये भी ठीक है। यू कैन गिव एनी नोटेशन। आप इसको कैपिटल टी कह दें, दैट इज आल्सो यूज्ड इन सम बुक्स। So this is your doubling time. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डबलिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग ऑफ 2 जो है ये होता है एक्चुअली 0.69 समथिंग डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। तो ये 0.69 को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 0.70, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू गेट द डबल टाइम, ठीक है। अब आपके पास अगर आप इन जनरल देखें तो इसमें यहां पे तो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है? दिस इज योर रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ ग्रोथ रेट। इसको अगर आप हम लेमडा कह दें तो यहां पे आपके पास लेमडा आ जाएगा। सो इन जनरल द डबलिंग टाइम in any population growth model is this is your formula for the doubling time, ठीक है। This formula in general will give us the time in which the population gets double. That's why we call it doubling time. So this is your general formula for finding the doubling time in any population growth model, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ 70 भी कहते हैं। लॉ ऑफ 70, लॉ ऑफ 70 क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे log of 2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.70 के मींस 0.70 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसको इसलिए लॉ ऑफ 70 भी कहते हैं या इसको डबलिंग टाइम कहते हैं। If you have any question, you can ask me.